did you decide कि you want to get into data science? What drive you? I'm an EC, I'm an electronics and communication engineer. So I used to work a lot with embedded devices. You can think of it as small computers, Arduino and sorts. बट तुमने डिसाइड कैसे किया कि इसको प्रोफेशनली कैसे मैं मोनेटाइज करूँगा, लाइक करियर में कैसे इंक्लूड? At that point of time, like passion मिल गया, I thought कि follow करते हैं. Immediately monetary में सोचा कि कुछ तो पैसा होगा. Personality speaking, not much Android, तो obviously. Android, NG करके बुलाते थे हम तो. मैं. अच्छा. Yeah, he's like a very chill guy, you know. वो ऐसा सिखाता था, कुछ complex लिखता था mathematical equation. Don't worry if you don't understand. It will be okay. करके वो कंटिन्यू करता था, बट कभी ना कभी समझना पड़ता है. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मेकिंग सेंस एपिसोड 3. मौसम बहुत बढ़िया है, चाय पकौड़े हैं और चाय पकौड़ों के साथ मैं आपका होस्ट शिवम. I am Sudeep. And we have a very amazing guest who has cracked into data science, coming to here to explain his career experience in data science. Siddhartha over here. Siddhartha, do you want to introduce yourself quickly to our audience? Hi everyone, I'm Siddhartha Basu. I'm working as a data scientist at Lenskart. I've been working in this field for about 2 years now. I guess it has been good, and my employers will hopefully back me up on that. I enjoy traveling. I like playing football. I also like reading new novels. I'm trying to get back into it. And when I need stress in my life, I play FIFA. But anyway, I'm really excited to be here. You play FIFA when you want stress in your life? Well, technically, I want to play it to de-stress myself, but I end up getting more stress from it, and I do not suggest it. Okay, ये लिख लेते हैं. So to start with, ये data science वगैरह के बारे में सुना बहुत ज़्यादा है, लेकिन मतलब ये होता क्या एक्चुअली, कुछ क्योंकि समझ में आता नहीं है इसका व्हाट डज इट इवन मीन. तो बेसिकली इट्स लाइक सेइंग कि पीपल हैव गिवन यू फैक्ट्स, पीपल हैव गिवन यू सम काइंड ऑफ एनी डेटा पॉइंट्स, एनी इंफॉर्मेशन एंड स्टफ. तुम्हें क्या करना है, यू हैव टू टेक दैट डेटा, यू हैव टू, यू कैन से प्यूरिफाई इट. ओके, ऐसे गंगा जल डालो उस पर, एंड देन उससे तुम्हें ऐसे इंसाइट्स निकालने पड़ेंगे. यू हैव टू गिव सम whatever results or whatever predictions what the customer requires, तुम्हें वो सब उन्हें देना है. Whatever useful things you find in that data. It's like saying कि तुम मुझे आलू दो, मैं तुम्हें सोना दूंगा. अच्छा, इधर से आलू डालो, उधर से सोना निकलेगा. So yeah. अच्छा, तो ये पूछना था कि data science, is it similar to machine learning in any way? Well, you could say that machine learning is considered to be a part of data science. अच्छा. Data science को तुम लोग एक बहुत बड़ा box समझो. Okay. Machine learning comes in that box, right? Data science is involving, is like it involves you from collecting the data to cleaning it to getting some insights out of it, visualizing it, and then finally, if required, you feed it to a machine learning model. एंड उससे तुम अपने प्रेडिक्शंस निकालो, अपने फोरकास्ट निकालो, इंसाइट्स निकालो, जो निकालना है निकालो. सो मशीन लर्निंग कैन बी कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ डेटा साइंस. ओके, तो मतलब इतने ज़्यादा थोड़े टेक्निकल टर्म्स हो गए, मुझे भी थोड़ा बहुत सॉफ्टवेयर ऐसे डेवलपमेंट समझ में आता है. हाउ इज़ इट लाइक डिफरेंट फ्रॉम योर यूजुअल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इफ डेटा साइंस इज? वेल, द मेन डिफरेंस आई हैव नोटिस्ड इज दैट कि सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, उनके पास काफ़ी टाइट डेडलाइन होगा, राइट? Like उन्हें बोला होगा you have to get this done in 2 weeks or you have to get this done in 3 weeks or something. अच्छा, जैसे ही लॉगिन पेज बनाना है या फिर हाँ, तुम्हें कुछ भी बनाना है, कोई एक बैक एंड कंपोनेंट बनाना है, फ्रंट एंड कुछ भी तुम्हें करना है, you have 2 weeks, get it done. And it's like saying you have a fixed set of instructions and you have a fixed set of results. In the case of data science, for like the problem statement, first you have to understand it, ठीक है? Then you have to proceed towards collecting the data and so on and so forth. ऐसे करके हम क्या करते हैं basically? It's like a continuous process, you can say. So I mean to say this is a little more open-ended than regular development. Exactly. It's more open-ended because you're not always certain कि तुम्हें पहले try में ही तुम्हें अच्छे results मिल जाएंगे, what you were expecting.
So you keep going at it until a certain level of like satisfaction तुम्हें मिल जाए कि हाँ results अब अच्छे आ रहे हैं. Depending on some metrics, maybe you could say accuracy, maybe you could say precision and so on. But depending on that, जब तुम satisfied हो, then you can call it कि ठीक है, this is now ready to be deployed somewhere. So that is the main difference in my opinion कि यहाँ पे deadline थोड़ा flexible है, at least in the companies that I have worked at. Got it. तो मुझे थोड़ा समझ में आ गया कि this heavily depends on मतलब जैसा आपका डेटा है और कैसे प्रोसेस कर रहे हो. लेकिन जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में क्या होता है, जो आप प्रोडक्ट्स बनाते हो, यू माइट बी एक्सपीरियंस कि उसका कुछ डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है कि भाई मैंने ये प्रोडक्ट बना दिया, इसको ये यूजर्स यूज़ कर रहे हैं. कोई डेटा साइंस का ऐसा कोई एग्जांपल्स है यूज केसेस जो डेटा साइंस सॉल्व करता है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट? So have you used Netflix? You have used Netflix, right? Yeah. So the first time जब आपने लॉग इन किया, ये मुझे नहीं पता क्योंकि मैं हमेशा दूसरों के अकाउंट यूज कर लेता हूँ. ये तो कॉमन होता है. अरे यार, हाँ fair enough. But ठीक है, आप you have logged into someone else's account, right? But अब तुम क्या करोगे? If you like some movie, Netflix has an option of thumbs up, double thumbs up, add to watch list. Netflix यहाँ पे क्या कर रहा है? It's trying to learn कि what kind of movies you like. Now you are screwing up your friends' recommendations, उसमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है. But so that's data for Netflix. Exactly, that is data for Netflix. अभी वो क्या करे? It's learning what genre of movies you like. It's not just that उसमें actors कौन है, actresses कौन है, ठीक है? Who's the director? It goes that deep. It goes that deep. So basically उसको तुम्हारा genre पता चल गया. Maybe it learned a preference for your actor. तुमने ऐसे 3-4 ऋतिक रोशन की movies like कर ली, वो समझ जाएगा ना कि he likes this guy likes ऋतिक रोशन. अगली बार से okay. But basically yeah. तो Netflix usually on startup what it says कि जब तुम पहले बार login करते हो, what languages do you prefer? And then what kind of movies are you preferring? तो उसके basis पे वो content curate करता है. It personalizes the movies and the TV shows it recommends to you. This is a prime example of recommendation systems. अच्छा, तो like similarly जैसे Spotify के song recommendations हो गए. Exactly. Spotify में भी same case. When you log in तुम्हें language पूछता है, तुम्हें पूछता है कौन से artist पसंद है तुम्हें. ये गाने पसंद है कि नहीं. You even like songs. And depending on that वो तुम्हें station suggest करता है. और some playlist suggest करता है कि ये सुनो वो सुनो. Again, if you now move on to e-commerce companies, Amazon पे you view some product, okay? Now when you view that product, if you scroll down, it says something like people who bought this also bought this. Yeah. मतलब if you're looking for a cricket bat, तो वो ये suggest करेगा कि जिन्होंने bat खरीदा, they also bought a ball. Yeah. A very simple, simple but I get your point. Yeah. सारे recommendation system के examples हो गए. Is there anything else that you'd like to? Yeah, I mean, so this is one example of recommendations, right? एक और है कि again in e-commerce companies, तुम्हारे पास जो user base है तुम्हारा, what you can do is that you can categorize them into different groups. कुछ users तुम्हें ऐसे मिलेंगे कि बहुत frequently तुम्हारी website पे आते हैं, चीज़ें खरीदते हैं. कुछ users मिलेंगे कि बहुत खर्चा करते हैं, maybe उतना frequently नहीं आते हैं. There are some users कि बस आके they got disinterested and they left. ठीक है, अब तुम ऐसे वाले यूजर्स को टारगेट कर सकते हो. व्हाई डिड दीज यूजर्स केम हियर बट व्हाई वर दे नॉट एबल टू फाइंड एनीथिंग दैट दे लाइक्ड? वर वी नॉट सजेस्टिंग गुड इनफ थिंग्स फॉर देम? डिड दे नॉट फाइंड व्हाट दे वांटेड हियर एट ऑल? ठीक है, तो तुम यहाँ पे कस्टमर बेस को टारगेट कर सकते हो. कुछ लोग ऐसे होंगे बहुत पहले बहुत कुछ खरीदते थे बट रिसेंटली कुछ नहीं खरीदे. यू कैन मे बी रीच आउट टू देम कि वो व्हाट वेंट रॉन्ग. Have you found a better competitor for us? Like ऐसा कुछ मिल गया कि that you're buying from them, not from us? Are we missing some products in the lineup? It's interesting, but at the same point of time, it's kind of two sides of the same coin. कि they're also playing with your psyche कि भाई you know what can they can do to make you stick to the product. Yeah. तो ये सब तो हो गया कि these are the recommendation system, ये वो हो गया. But when did you decide कि you want to get into data science? What drove you? Like what interested you? What piqued your interest? So basically, I'm an EC. I'm an electronics and communication engineer. Okay. So I used to work a lot with embedded devices. You can think of it as small computers, this Arduino and sorts, right? तो उस पे sensors लगाता था and those sensors used to collect data like temperature or light readings and so on, right? तो I got interested कि ऐसे data points generate हो रहे हैं. I'm seeing them being generated every 5 seconds, every 10 seconds and so on. And मुझे ऐसे data sets मिले online where you know we had I guess some frequency oscillations, ये सब data था हमारे पास and we had to analyze them for any anomalies in them.
तो इस सब में जब ये सब कुछ कर रहा था, आई केम अक्रॉस पाइथन लाइब्रेरी. पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. पाइथन लाइब्रेरी कॉल्ड pandas. यार ये जानवरों के नाम क्यों रखते हैं यार, ये कोई वियर्ड ऑब्सेशन है क्या जानवरों से? अरे एक तो एनाकोंडा भी है. अरे ओके, यू कंटिन्यू. Yeah, but basically, yeah. So I used pandas to process, just to load this data into a tabular form of sorts. It's called a data frame. And इससे थोड़ी इंटरेस्ट आने लगी कि और क्या क्या कर सकते हैं. सॉरी, थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन, बट ये एम्बेडिंग प्रोग्रामिंग करते वक्त तुम पाइथन यूज कर रहे थे ना किसी? Now the microcontroller that I was using, मैं embedded C यूज कर रहा था उस टाइम पे. अच्छा. But I had knowledge of Python beforehand. Got it. तो इसलिए मुझे वो ट्रांजिशन करने में दिक्कत नहीं हुई कि लाइक पहले तो रीडिंग्स कलेक्ट हुए, दे गॉट डम्प टू सम CSV फाइल. समझ ठीक है, एंड देन सेपरेटली मैंने वो CSV फाइल उसके डेटा को एनालाइज किया. Got it. So you kept on learning about data and जैसे धीरे धीरे चलता गया. एंड हमारे डिपार्टमेंट में देयर वाज लाइक डिपार्टमेंट, आई मीन देयर वाज सब डिपार्टमेंट कॉल्ड कंप्यूटर विजन एंड ग्राफिक्स लैब. okay. तो स्टूडेंट. तो वहाँ पे बेसिकली वी यूज टू फोकस ऑन इमेज प्रोसेसिंग एंड लाइक कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड कंप्यूटर विजन. सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नेम. Image processing क्या है? Image processing, it's like saying you're manipulating images. Even your simplest Snapchat filter is an example of image processing, जहाँ पे तुमने ऊपर से एक टिंट डाल दिया of some sort. कुत्ते वाला फिल्टर डाल दिया. कुत्ते वाला फिल्टर थोड़ा एडवांस्ड हो गया. थोड़ा एक फेस ऐप आता था जिसमें वो तुमको बुड्ढा कर देता था और बच्चा बना देता था. Exactly. वो थोड़ा that's moving towards computer vision. Image processing is slightly simpler, but yeah. Okay, got it. तो इस सब में इंटरेस्ट आने लगा. एंड देन आई वेंट तो उस टाइम पे आई वाज वेरी इनटू एम्बेडेड डिवाइसेस. तो जो सीनियर्स उस पे गाइड कर रहे थे, दे सेड कि तुम CVG जाओगे, यू विल गो मैड. What do you mean you will go mad? पागल हो जाओगे. You like they'll go mad as in eureka moment कि अच्छा इतना. नहीं they'll overwork you and you'll go mad. Oh my god. And that Or fascinated that you. made you get into it. हाँ अरे मैं सुना कि यार लोग पागल हो रहे, ऐसा क्या चल रहा है वहाँ पे, एक बार जाके देख के आता हूँ. So I got to know about it from the You CVGs. were too sane that you tried to. No, I was already sort of insanity once. पहले से थोड़ा हिला हुआ हूँ, तो Okay. might as well embrace it. तो वहाँ पे जाकर सीनियर से बात किया and they said that कि yeah we work on like data science projects, we work on computer vision projects and so on. तो इसका एक entrance exam होता था. Okay. So and that was mainly about mathematics and statistics के questions हैं, तो वो दिया, I got in. After How that, is statistics and mathematics related to this? so data science mainly तुम्हें mathematics and statistics पे ही concentrate करना पड़ेगा. So the most basic concept जो तुम्हें पहला चीज सिखाएंगे data science में is linear regression. चाहिए वही इंटीग्रेशन और नहीं रिग्रेशन अलग है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन अलग है. इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन अलग है क्या? हाँ थोड़ा इट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ. Okay, guys, I'm not proud about maths this bit of the conversation, but yeah, let's go maths ahead. course में था linear regression. And the funny part is that I used to be a topper in maths, but now I feel the most dumbest here in the conversation. But basically तो it's very essential statistics and mathematics. यहाँ पे मतलब it's the base of everything, you can say. Okay, right. So then you moved on to your CVG stuff. Yes. तो initially उतना कुछ हो नहीं रहा था वहाँ पे. They used to give us some assignments sometimes, हम करते थे. Then one day they're like, we'll be selecting, I don't remember how many students, n number of students to send to IIT Delhi for a project, for an internship basically. Right? Okay. तो they gave us like पहले एक written exam था and then there was an assignment that they gave us. तो मुझे याद है मेरे दोस्त चले गए बादामी caves घूमने. Me and my other friend like we were interested in getting the internship. तो हम लोग बैठ के पूरी रात बैठ के वो assignment किया. We submitted the next day. How deep were you in college? As in like ये third semester के? This is somewhere around mid or fourth semester. मतलब around second year you started exploring all of this. Yes, everything जो भी मैं अभी बात कर रहा हूँ. First year में तो यार क्या ही किया था, गया था, we had some weird subjects like. First semester में तो physics, chemistry, maths ही सिखाते रहते हैं. वैसे maths तुम्हारे लिए useful होगा. I don't know. Yeah, but तो ये we are in the middle of fourth sem now. तो हमने assignment दिया, ठीक है, they were impressed, ठीक है तुम लोग जाओगे, sorted.
लाइक वी वर हैप्पी कि ठीक है कुछ तो मिला हमें, वी वर एबल टू समहाउ ब्रेक थ्रू इनटू दिस फील्ड. ओके. फिर ठीक है बाकी का फोर्थ सेम निकल गया, फाइनल एग्जाम्स हो गए. इट वाज सेड कि तुम लोग घर मत जाना बिकॉज वी विल बी लिविंग राइट आफ्टर द फाइनल एग्जाम्स. एंड सो दे टुक अस टू IIT दिल्ली. एंड यार कैंपस इतना बड़ा भाई, घुस के देखा कि यार ऐसे बस चल रहे हैं अंदर, उसके अंदर बस चल रहे हैं, कैंपस के अंदर बस, कैंपस के अंदर बस चल रहे, ऑटो चल रहे, ऑटो पैसा मांग रहा है इधर से उधर जाने के लिए. हमारे कैंपस में तो एवरीथिंग इज एट वॉकेबल डिस्टेंस. एग्जैक्टली. एंड द मोस्ट वॉकेबल डिस्टेंस प्लेस इज द प्लेस यू पे द फीस. ओह या. हाँ. बट बेसिकली अच्छा तो देख के दिमाग खुल गया है, इतना बड़ा कैंपस है. बट एनीवे या तो हम वी गॉट रजिस्टर्ड, वी गॉट पुट अप एट अ हॉस्टल, पूरा ओल्ड हॉस्टल वाइब्स. बहुत मजा आ रहा था. दे डिडंट गिव अस अ मैट्रेस. अच्छा, जमीन पे सोया IIT में? हाँ जमीन पे सोया? जमीन पे नहीं, लकड़ी का ऐसा बेड था. ओके. ऐसा अपन उस पे जाकर सो गया. ये अपने बच्चों को सुनाना कहानी. अरे वो स्ट्रगल होता है ना. तुम्हारे पापा हर रोज 10 किलोमीटर. तुम्हारे पापा लकड़ी के बेड पे सोते थे. हाँ. अरे पापा दिल्ली में गवर्नमेंट कॉलेज जाके लकड़ी के बेड पे सोते थे. मोर प्रिसाइज. They were asking like 600 a month for a mattress. यार मैं नहीं था भाई मेरे पास इतने पैसे. I prioritized कि छोड़ो. 500-600 is way too much expensive way too for much. college. हाँ. I said कि ब्लैंकेट गलती से लेके आया हूँ दिल्ली में इन समर, ब्लैंकेट पे सो जाता हूँ. सॉर्टेड. हम लोग हर सुबह ऐसे जाते थे टू द लैब इन द कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट ऑफ IIT दिल्ली. एंड आवर मेंटर्स वो पहले दे टॉट अस सम बेसिक्स अबाउट इमेज प्रोसेसिंग एंड डेटा साइंस एज वेल ऑफ कोर्स. तो इट वाज अ 1 month इंटर्नशिप. 2 हफ्ते ऐसे निकल गए. एंड देन दे गेव अस अ प्रोजेक्ट विच वाज एक्चुअली गिवन टू अस बाय एम्स दिल्ली, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज. वहाँ पे हमारा सीन ये था कि वी हैड टू बिल्ड अ टूल टू एनोटेट अ डेटा सेट which would be tracking the tools that these surgeons are using. In my case, it was of suturing as in stitching. Oh, so this was a project to make a tool for annotation that are supposed to be used in some another project. Exactly. The annotated data, if we had time remaining, we would be training our own models, which was sort of unlikely. But yeah. So बुलाया किसी और चीज का, करा कुछ और कर. थोड़ा बहुत ऐसा हो गया. मोटी गंगा बोल के नानी को बुला. हाँ ऐसा कुछ हो गया. But yeah, we worked really hard on that project. So basically it's a scissors because you have scissors and you have needles, right? So you have to track those throughout the video. You have to create a border on them. Just imagine it like that. तो ऑब्वियसली अब मैं बैठ के खुद करने वाला हूँ नहीं, पता नहीं कितने कुछ देखिए some 50 videos or something. And how did you even sit through those? No, luckily most of them it was like the surgeons were doing it on a piece of paper, sandpaper or something. So मतलब that is a practice. Okay. ಸ್ವಲ್ಪ skeptical. God bless the hospital that's gonna use this data on paper. No. Our aim is what, to track the tools, right? अच्छा. So for that case it was fine. But था यार उसमें एक बकरी के भेजे वो ये कर देते थे. थोड़ा क्रॉस हो जाएगा. हाँ ठीक है. Anyway, so we worked really hard at it. सुबह 4 बजे सोते थे, 8 बजे वापस उठ जाते थे. Not just because कोई हमारे पीछे लगा हुआ था, but also because we liked it. Yeah. And when the final result came, we were really happy. So we were able to make the tool, and after that, घर वापस आ गया. And it was like a really good learning experience for us because. But do you agree with the statement that कि CVG जाने से लोग पागल हो जाते हैं? हाँ पागल तो हो जाते हैं. You became mad at some point. हाँ मतलब पहले से ही था थोड़ा और enhanced version. मतलब मैं होता तो मैं तो खुद को पागल उसी पॉइंट पे समझ लेता जब मैं पेपर पे स्टिचिंग की वीडियोस देख रहा हूँ. हाँ यार वियर्ड था काफी वो. अरे वो तो ठीक है. some people got videos की एक ड्रिल हो रहा है, drilling into the skull of someone. Oh my god, let's so, okay. So मतलब I see that you've been like very exploratory around your career paths and everything led into data somehow somewhere around, right? Yeah. So that's really fascinating to know. But तुमने डिसाइड कैसे किया कि इसको प्रोफेशनली कैसे मैं मोनेटाइज करूँगा, लाइक करियर में कैसे इंक्लूड करूँ? हाँ राइट. तो दिस एक्चुअली हैपेंड व्हेन आई वाज एट IIT दिल्ली ओनली. एक सुबह लाइक आई थिंक to add on to his question, did you think about monetary aspect of this particular profession that you were going deep into? At that point of time like पैशन मिल गया. आई थॉट कि फॉलो करते हैं इमीडिएटली मॉनिटरी. मैं सोचा कि कुछ तो पैसा होगा. मतलब मैंने सुना था कि हाँ यार डेटा साइंस तो पैसा तो होगा थोड़ा. बट मेनली
मतलब ज़्यादा हरीश चंद्र नहीं बनना, बट मेनली ये आई वाज फॉलोइंग माय पैशन ओनली. पैसे के बारे में थोड़ा बाद में पता चला प्रॉपरली इन डिटेल. बट Yeah, so you were disappointed or you were Surprised, happy? pleasantly Surprised. it depends on the companies you get into. Oh. Nice. We'll get there. We'll get there. So yeah, तो ठीक है, IIT दिल्ली गया. It was a great experience. काफ़ी कुछ सीखा. एक वर्क कल्चर बन गया, मतलब थोड़ा ज़्यादा वर्क कल्चर बन गया, बट हाँ बन गया मेरा कि how I'm going to work. You got used to work. Yeah, that laid my foundation कि मैं ऐसे काम करने वाला हूँ. तो फिर घर वापस आया and then they called us back early to our college कि यार हमें बताओ, रिपोर्ट बताओ, what happened, how did it go, क्या क्या सीखा तुमने, ये सब भी हुआ. And then we got handed our first proper ML project की अब से तुम्हें ये करना है. Okay, and then you started applying for jobs. No, not immediately because तब it was 5th semester. So I had started looking for internships क्योंकि यार पैसे कम पड़ रहे थे. I had already started looking for internships, but initially मैं इंटर्नशाला पे अप्लाई कर रहा था. And यार वहाँ पे ना मुझे 2-3 महीने ये लाइक पता चलने लग गए कि someone has viewed your application. 2-3 महीने बाद एक नोटिफिकेशन आया, someone has viewed your application. I was like, oh, ये भी एक फीचर है. तो तुम्हारा एप्लीकेशन कोई देख ही नहीं रहा था. I was already applying to jobs जहाँ पे 10,000 लोग अप्लाई कर चुके हैं. जब सिलेक्शन दूर दिख ही नहीं रहा है भाई. रिजेक्ट हो रहा हूँ क्या, बिना देखे रिजेक्ट हो रहा हूँ. ऐसा क्यों हो रहा था? बेसिकली इट्स लाइक अनदर एस्पेक्ट ऑफ डेटा साइंस से हो कि जब बहुत ओवरलोड होता है ना रेज्यूमेस का एक कंपनी में, दे यूज समथिंग कॉल्ड एन ATS. And that basically filters out some resumes. इसको भी डेटा साइंटिस्ट ही बनाते हैं. हाँ. So that data scientists using data science to select more data scientists. Yeah. To filter out some ideal resumes कि हाँ ये एक अच्छा फिट होगा. इसके लिए लोग क्या करते हैं, रेज्यूमे लेते हैं, उसमें कीवर्ड्स उठाते हैं जॉब टाइटल से, वाइट में डाल देते हैं. तो what do you think कि तुम्हारे उसमें कीवर्ड काम नहीं किया? Like was it like experience, set of experience, or was it वो like... हैक बता रहा था कि इसको गेम कैसे वो एक हैक बता रहा था. Okay. In my case I think it wasn't passing because I wasn't wording my resume properly. Experience, so मैंने अपने IIT दिल्ली का experience डाला था, so I thought that would come in handy. Initially अरे यार my first resume was like 2-3 pages long. क्या क्या भर रहा हूँ मुझे खुद नहीं पता. Exactly 3 पेज भाई. कुछ भर, अरे एक तो वो वर्ड में बनाया था, ठीक है, तब latex I don't know what it was. latex में okay. Overleaf latex. या मैंने तो अपना रेज्यूमे फिग्मा पे बनाया था इसलिए. बट या तो धीरे धीरे बाद में फिर कोविड आ गया, हम सब घर चले गए. धीरे धीरे बाद में ठीक है थोड़े इंटरव्यू, मतलब एटलीस्ट कोई देखने लगा मेरे रेज्यूमे को, कोई असाइनमेंट्स देने लग गया. असाइनमेंट्स किया, अब असाइनमेंट्स नहीं देखे. Dude, you had too many friction points. बहुत सारे मेरा दिमाग खराब हुआ है. कभी रेज्यूमे नहीं देखते, कभी असाइनमेंट नहीं देखते, एंड वो जेनेरिक मैसेज आ जाता है. वी आर सॉरी टू इन्फॉर्म. ऐसे रोल्स में ना, जैसे डेटा साइंस वगैरह रोल्स में क्या होता है कि विशियस साइकिल क्रिएट हो जाती है. जैसे इन सीनियर्स रोल्स में कि यू डोंट have a job because you don't have any experience. You don't have an experience because you don't have a job. And you just keep on running in loops. Yeah. So how did you crack it then? At one point of time मुझे लगा कि यार कहीं से वर्क एक्सपीरियंस और उठा लेता हूँ. I started applying to embedded device internships as well. एंड एक में हुआ डिसाइड कि हाँ ठीक है तुम ऐसे कोडिंग कंपटीशन में बैठो, वहाँ से करेंगे. तो वहाँ पे सिलेक्ट हो गया, इंटरव्यू हुआ, वहाँ पे भी सिलेक्ट हो गया. एंड आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन एम्बेडेड डिवाइसेस यूजिंग समथिंग कॉल्ड योक्टो. और मुझे ये भी याद नहीं कि वो होता क्या है, बट बेसिकली इससे मैं OS वगैरह बनाता था विद सम कस्टमाइजेशंस. हाँ ऐसा मान लेता हूँ कि इतना ही है, ठीक है. एंड देन आई मूव्ड ऑन टू अनदर कंपनी दैट यूज्ड टू लाइक होस्ट quiz competitions or poetry competitions or debate competitions for kids online. ठीक है. तो मैंने उनका पूरा registration का backend बनाया. They would go to the website, they would submit their details. Still backend work, right? हाँ. Okay. Backend work. तो वो अपना details डालेंगे and I would first of all obviously store करना है details को. You have to assign judges to them. You have to assign slots कि कौन से slot में तुम participate करोगे. ये सब backend APIs बना रहे थे तुम. हाँ. ये सब कुछ किया मैंने. And then finally
एक आई गेस कुछ और हफ्ते बाद I got a data science intern role at a company. Finally. Yeah, finally. At a startup called Tribes.ai. Oh. So How did it feel at that moment कि finally मिल गया? yeah, I felt a huge relief because मैं हर रोज लाइक ऐसा कर रहा हूँ कि यार डेटा साइंस कुछ मिल जाए, अदरवाइज आई विल गो कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक. Was the internship paying you? या बोथ इंटर्नशिप्स had paid me. तो That way it must have been a huge relief. And was it हाँ, after the college? payments were huge relief उस टाइम पे. तो मतलब Was it after college or? No, this was जो भी मैंने अभी बताया, this was around the end of sixth sem. Oh, you got the internship in the college itself. And Yeah. And Tribes का मिला मुझे when we had already given our 6th sem exams and 7th sem बस start होने वाला था, तब Tribes शुरू हुआ. Oh. अच्छा. हाँ. 7th sem start होते टाइम पे Tribes चालू हुआ. Yes. And you started working there as an intern, while in the college. Yeah. मतलब कॉलेज का curriculum. Yeah, obviously जो भी मैंने अभी mention किया सब कुछ work from home था क्योंकि COVID. Yeah. Oh yeah, COVID gave a lot of people a lot of boost in terms of working from home and managing your bullshit degree. Yeah. So coming to this another question कि to land this role, you said you were missing certain keywords. Did they come as skills and tools, skill sets and tools that you weren't mentioning, or what are these things that you had to mention on the resume? I think I had to be more concise about the projects, about my experience. And जोश में मैंने शायद कुछ extra projects डाल दिए होंगे. That made my resume more lengthy. I told you 2-3 पेज हो गए थे. But still, like I think his question is more around कि skills. हाँ. क्या Skills तो at that point of time basically what most data scientists use is Python. Right? अच्छा. And as for tools, Python में जो libraries है, so you're using pandas जो मैंने mention किया है, and you're using NumPy. That's used for जानवर वाले coding. हाँ, जानवर वाले coding. You're using something called TensorFlow for making neural networks. You're using Keras. You're using PyTorch and so on. तो ये सब उस टाइम पे थोड़ा बहुत आइडिया था, बट आई वाजंट वेरी कॉन्फिडेंट इनफ अबाउट दिस, सो मैंने उतना डाला नहीं था, उतना स्ट्रेंथ नहीं डाला था उस पर. सो आई गेस दैट कुड हैव बीन वन ऑफ द फैक्टर्स कि व्हाई. एंड ऑल्सो यू हैव टू बी स्मार्ट अबाउट वेयर यू अप्लाइंग. तुम कहीं पे अप्लाई करो जहाँ ऑलरेडी 1,000-1,500 लोग अप्लाई कर चुके हैं, एंड द जॉब पोस्टिंग इज लाइक 3 or 4 weeks old. पहले मैं ये सब नोटिस नहीं कर रहा था. पोस्टिंग लाइक 3 or 4 weeks old. कौन देखने वाला है अनलेस यू हैव an exceptional resume and उन्होंने already किसी को select नहीं किया. So okay, so we got through that. You got interested in data science and you then started applying for jobs and you broke in, like cracked your first internship. तो इसके बाद क्या path smooth था तुम्हारे लिए, like jumping from one role to another, या फिर data science continue करना आसान था, या फिर? Yeah, data science continue करना आसान था because it's what I like, right? And initially Tribes में they didn't give me a data science project up front. बोला कि first you should get familiar with the data. So they put me to work on. So they basically gave me some roles of a data engineering intern. अच्छा. And उसमें my first job was to clean up the data extraction process. मतलब उसका जो कोड है उसको तुम जहाँ जाते हो वहाँ पे तुमको डेटा क्लीन करने के लिए बोल देते हैं और तुमको डेटा साइंस का नाम दे देते हैं. तो डेटा इंजीनियरिंग और डेटा साइंस is a different role. Yes. Data scientist and data engineering is a different role. Most definitely. But is data engineering a part of data science? No, you can't really call it like that. Data engineering is mostly taking care of the data. ऐसा समझो कि कोई तुम्हें डेटा थोड़ा कहीं से उठा के कलेक्ट करके, हाथ थोड़ा गलत जाए, उठा के कलेक्ट करके दे गिविंग इट टू यू. उसके ऊपर तुम अपने फिर जो मैं बोल रहा था कि डेटा मिल गया तुम्हें, you can clean it. To give a rough analogy, it's like data collection मान लो. For a chef, you're chopping up the ingredients and keeping in place so that chef can No, cook it. it's for a chef you're collecting the ingredients. Oh, अच्छा. सब्जी खरीदने जा रहे थे. हाँ. अच्छा. सब्जी खरीदने वाला डेटा इंजीनियर है और खाना बनाने वाला डेटा साइंटिस्ट है. मान सकते हैं. Nice. और खाना खाने वाला वो तो End user. हमेशा एंड यूजर ही खाता है. हाँ, डिजाइन करता है. ओके, तो मतलब इस पूरी जर्नी में कोई ऐसा कोई मेंटर जिसने बहुत इन्फ्लुएंस किया हो इन टर्म्स ऑफ? नहीं, wait, before coming to that, Tribes as a company, what did that used to do? Maybe. Right. So basically कुछ companies होते हैं ना where they make And the sorry, to complete my question, what did company Tribes used to do? What was their product and how did data science play a role in?
Yeah, got it. So basically, tribes, there's several companies जहाँ पे if you work there now, they make you fill out timesheets. हाँ, जैसे ये तुम्हारे MNCs हो गए, TCS, हाँ एग्जैक्टली, बिकॉज यू आर वर्किंग फॉर क्लाइंट्स ना, एंड यू हैव टू पुट डाउन कि मैंने इस क्लाइंट के लिए इतने घंटे काम किए, इतने मिनट काम किया, इतना इतना काम किया, तो उसके हिसाब से यू आर बिलिंग द क्लाइंट्स. अच्छा. ओह, राइट. सो व्हाट डज दिस मीन? कोई एम्प्लॉई अगर इफ ही और शी इज नॉट रिकॉर्डिंग द टाइम प्रॉपरली, कि मैंने मे बी दे वर्क 3 hours एंड दे मिस्टेकनली रिकॉर्डेड एज 1 hour, आई एम जस्ट सेइंग एन एग्जांपल, ठीक है, देन व्हाट आर यू डूइंग? यू आर बेसिकली क्रिएटिंग एन इनवॉइस जिसमें तुम पैसा कम ले रहे हो, जबकि एफर्ट ज्यादा डाला गया है. उल्टा भी हो सकता है, तुमने 1 घंटा काम किया, 3 घंटा बोल दिया कि मैंने काम किया, यू आर नाउ ओवर चार्जिंग द क्लाइंट. What tribes aimed at doing was creating these timesheets automatically, depending on the work activities of the employee. अच्छा, ताकि जितने घंटे आप काम करोगे उतना ही दिखेगा. Exactly. तो वी ट्राई टू डू दिस विदाउट बीइंग टू इंट्रूसिव. हम लोग क्या करते थे कि तुम जब भी अपने लाइक ऑफिशियल अकाउंट से काम कर रहे हो, यू आर डूइंग एवरीथिंग ऑन योर गूगल वर्कस्पेस अकाउंट या माइक्रोसॉफ्ट टीम्स अकाउंट, सम एक्टिविटी, कुछ भी कर रहे हो तुम, ज्वाइनिंग अ मीटिंग, क्रिएटिंग अ मीटिंग, सो ऑन सो फोर्थ. ये सब यूज करके वी ट्राई टू गेट एन एस्टिमेट कि एम्प्लॉय ने एक दिन में कितना काम किया. एंड ऑल्सो वी यूज टू ट्राई टू लिंक दिस कि ये जो एक्टिविटी था, दिस वॉज लिंक टू दैट क्लाइंट ए. राइट. तो इधर तुम्हारा डिवीजन हो गया, एक तुम्हें मिल गया कितना टाइम काम किया एम्प्लॉय, ऑल्सो तुम्हें मिल गया किस क्लाइंट के लिए कितना टाइम काम किया. सो दैट योर रेवेन्यू जो मतलब जो तुम इनवॉइस जनरेट करोगे अपने क्लाइंट के लिए, दैट इज एक्यूरेट. यू आर नॉट ओवर चार्जिंग, यू आर नॉट अंडर चार्जिंग देम. अच्छा, मतलब ये प्रोडक्ट तो काफी सही है, लेकिन ऐसे कुछ लोगों को मैं जानता हूँ जो एक ऑटोमेटिक कुछ माउस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं जो अपने आप रोटेट करता रहता है, इट कीप्स यू एक्टिव. राइट. सो दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग अर्लियर, राइट, दैट वी आर नॉट ट्रैकिंग इट. उतना इंक्लूसिव होकर हम ट्रैक नहीं कर रहे. तुम माउस जितना हिलाना हिलाओ, इट वोंट मैटर. नहीं, मेरे कहने का मतलब था जो लोग चिल कर रहे थे, they try to game the system by installing certain softwares which just mimic user activity on the system. Yeah. So for that, we had processes जो ऐसे anomalies detect करते थे. Shit. There's two reaction to it. Oh, nice. Shit. Okay. So that's like nice to know. अच्छा, tribes का हो गया, but now that you're working for Lenskart, how did you switch your job role and how was this transition happened? So basically क्या हुआ था कि tribes में we eventually ran out of funding. Okay. Shit. You ran out of funding by how, like paying out more or I think operations? I think it was mostly in the operations side. Okay. Our Google Cloud, like हमारा सब कुछ we had it on Google Cloud and धीरे-धीरे उस पे सब First mistake. first mistake. तो ये like resources का cost बहुत आता है क्या data science में? No, because this was not just about data science. We were crunching raw data, right? कि वो data पहले collect करना है APIs से, Google के APIs से, Microsoft के Oh APIs से, shit, I Slack के. can imagine the number of API calls that are being made. Exactly. और हर एम्प्लॉय के लिए, हर एक्टिविटी के लिए हाँ, and I think it's time based कि इतने टाइम के बाद पोल कर देते डेटा. Okay. Damn. So basically Google ate up all your fundings. हाँ, obviously people were also there जो like उन्हें पे करने में भी लगता था. But yeah, eventually we ran out of funding and ऐसा एक दिन announcement आ गया. We are shutting down operations. निकल. I think इसी डेट लास्ट ईयर इसी डेट के अराउंड आया था. Oh shit! And we are having this podcast today. Yeah. How amazing is to have you here. 1 year celebrating your 1 year layoff. ऐसा मैं सुबह उठा, देखा Slack पे 2-3 नोटिफिकेशन है. Slack चालू था? हाँ, Slack था. हाँ यार. Because I was shutting at the end of the month ना. तो चालू था. And tribes में we never एक तो एकदम मल्टीनेशनल टीम था कि I had my teammates in Argentina, data science वाले, data engineers कुछ थे इंडिया के, कुछ थे नाइजीरिया के. तो ले ऑफ का तो हमने बात कर ही लिया. ये बोल रहा था कि तू लास्ट टाइम इसी ईयर के अराउंड ले ऑफ हुआ था. हाँ, बहुत ही शुभ दिन पे हम इसको पॉडकास्ट पे बुलाए. Yeah. इसी टाइम के आसपास हुआ था.
बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, तुम्हारे इस जर्नी में कोई तुम्हें ऐसे मेंटर्स रहे जिन्होंने हेल्प किया तुम्हारे प्रोसेस को इजी करने के लिए? राइट, तो ट्राइब से मेरे पास 2 मेंटर्स थे. एक था विनीत, लाइक हु वाज हेड डेटा इंजीनियर, एंड वन वाज गुलियर्मो हु वाज लाइक द हेड डेटा साइंटिस्ट. तो इन दोनों ने इनिशियली बहुत हेल्प किया मुझे. लाइक it's not like hand holding or something, but just the basic nudge in the right direction, क्योंकि it's a startup, you can't be expecting people कि हाथ पकड़ के ये सब करे. there's a lot of work to do, right? तो मेरे स्टार्टिंग से इन दोनों ने बहुत हेल्प की मेरी, and obviously my CEO Chris was also very helpful during this process. तो they were the guys who shaped what I am now, you could say, kind of. Awesome. But this was, you got mentors after your first job. उससे पहले कोई mentor? उससे पहले I'm asking this because sometimes what happens is it's not always about what you know, it's sometimes about who you know. Yeah, that's true. मतलब ऐसे in my previous job, in my first one जब मैंने embedded device खोले, nothing उतना ये नहीं, nothing to mention that much. Because again that was also a startup, not a lot of time for people. In my second company, the person who hired me, like he was a very friendly guy, and we used to have one-on-one sessions where he used to check up कि कैसा चल रहा है. It's not very strict or something, वो check up करता था कि हाँ चल रहा है, सही चल रहा है. I used to give him the updates. वो feedback देता था. I used to work on it. So he also helped me a lot in that process. कोई ऐसे famous personality that you followed in data science, which like क्योंकि बहुत सारी ऑडियंस क्या होता है, you was mentioning a lot about like your personal experience that ये मेरे mentors अच्छा. but ऐसे कोई personality which people can follow if they want to. Personality speaking, not much. Andrew Ng, तो obviously him. Andrew NG करके बुलाते थे हम तो. मैं अच्छा, so he's done really good job and he's like a very chill guy, वो ऐसा सिखाता था, कुछ complex फेंकता था mathematical equation. Don't worry if you don't understand, it will be okay करके वो कंटिन्यू करता था. बट कभी ना कभी समझना पड़ता है. बट तो उसके वीडियोस देख के लाइक बहुत अच्छा लगता था मुझे. एंड देयर इज दिस गाय, आई कांट रिमेंबर हिज नेम, जॉश स्टेमर. वो बहुत एक फ़नी तरीके से एंड इन अ वेरी इंटरेक्टिव वे वो डेटा साइंस स्टैटिस्टिक्स सब सिखाता है, अभी भी सिखाता है. ही हैज़ अ गुड चैनल एंड ही ऑल्सो रिसेंटली रिलीज्ड अ बुक. तो जॉश स्टेमर समथिंग लाइक दैट उसका नाम है. एंड हाँ, उससे भी काफ़ी हेल्प मिली मुझे. Got it. And then you finally landed in your current job, which is at Lenskart. How did you, like, what was your thought process that went on in your head after the company got closed, and how did you start finding new jobs? Well, I got the message at around 9 a.m. I started applying at 10 a.m. brush करके I started applying around 10 a.m. Didn't panic for 1 hour. नहीं, brush for 1 hour. नहीं ऐसा मम्मी पापा के पास गया, मॉम डैड ऐसा कंपनी बंद हो गई. अच्छा बंद हो गई, क्या बात कर रहे हो, ऐसे कैसे बंद हो सकती है. आई सेड कि दे रैन आउट ऑफ फंड. बोला था बेटा गवर्नमेंट जॉब ऐसा कुछ सिमिलर बोला था. अच्छा. बोला था कि तुम ऐसे इंडस्ट्री में हो where it is hire and fire. So you should be ready for these kind of situations. Wow. Oh, that was very motivating actually. बहुत motivating था. That's why you started applying art. नहीं, वो वैसे भी प्लान वही था because it's like it's like मैं इस चेयर पे बैठा हूँ, ठीक है, मेरे पैर में दर्द है, someone yanked the chair out from behind me, and मैं गिर गया हूँ, ठीक है, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ. मेरे legit ये feeling था. I was panicking. तो I just started applying for jobs and obviously Google का एक पोस्ट देखा तो अप्लाई तो एक बार करना पड़ेगा. But their requirements for entry level के लिए भी they're like not in Google as well. Yeah, not entry level, वो entry level नहीं था, but I just thought क्योंकि they were asking like 4 years experience and मैं तब 1 साल ही था बस. अच्छा. But I still thought कि maybe if someone gets hold of my resume शायद कुछ entry level job दे दे वगैरह. And ऐसे कई companies में apply किया था. And then actually what happened is कि कुछ interviews भी line up हो गए, उनमें भी दिया. One of them was from a company that Fractal Analytics, a very good company for data science, had acquired. तो उसका भी एक interview line up हुआ था, उसमें भी interview दिया था. And then an external recruiter, he called me and he said कि
We have an opening, like I'm an external recruiter, so we have an opening for data scientist at Lenskart and थोड़ा information दिया. ये how did these external like how How does did- they approach you like In my case तो मैंने अपना ऐसा डाल दिया था कि भाई open to work. Oh. Someone come and approach. Yeah. Open to work. I'm applying like LinkedIn crazy. पे डालते हैं LinkedIn. hashtag open to work. हाँ अरे मैं वो पोस्ट ऐसा टाइप कर रहा था, मतलब दैट ओपन टू वर्क मेरे प्रोफाइल पे आ गया था, ठीक है. मैं ऐसा टाइप कर रहा हूँ कि आई एम सैड टू से माय कंपनी हैज शट डाउन, ये वो एंड देन द कॉल केम कि ऐसा लेंसकार्ट हैज एन ओपनिंग फॉर डेटा साइंटिस्ट एंड आई वाज लाइक, पहले लगा कुछ ज़्यादा ही कोइंसिडेंस है, स्कैम है क्या. फिर लगा कि बंदा जेन्युइन है एंड आई वाज आल्सो एक्साइटेड कि यार एक ई कॉमर्स, मुझे इस पे एक्चुअली काम करना था एक ई कॉमर्स कंपनी में, वेयर इफ यू रिमेंबर आई मेंशन बिफोर अबाउट द यूजर सेगमेंट, द यूजर सेगमेंटेशन, रिकमेंडेशन सिस्टम्स. तो मुझे इन सब प्रोजेक्ट्स पे काम करना था. आई हैड वेरी स्ट्रॉन्ग लाइकिंग फॉर दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स. एंड I think लेंसकार्ट the product that Lenskart is focusing on, it's not targeting your psyche, how to stick on the product, but it's actually these are the products that you need in your daily life. Yeah, exactly. Specs. Yeah, spectacles. And we work a lot, we work hard a lot so that हम अच्छे spectacles suggest कर पाए अपने customers को. Sunglasses या spectacles हो जो भी हो. In terms of fashion. In terms of fashion, in terms of what you need. More importantly. What suits Lenskart you. का बहुत ज़्यादा breakthrough in terms of healthcare भी रहा है. हाँ. काफी ज़्यादा in terms of जैसे free eye checkups. Free eye checkup से Right? अब So, वो ऐसे ये सब भी कोई कुछ motivating factors रहे थे क्या कि I'm joining a company which Yeah, obviously Lenskart इतना well known brand, just an opportunity to give an interview over there. क्योंकि I've just come from, अभी तक जितने भी companies में काम किया है, like they were good companies but none of them were very well known. It's not like I was running after a very well known company, but I felt honored कि ठीक है Lenskart में एक interview देने का तो मौका मिलेगा. And plus उनके जो ये है, have you all ever tried it, the 3D try on? Yeah. Spectacles and everything. मुझे ये सब पे भी बहुत इंटरेस्ट था क्योंकि बैक इन कॉलेज ऐसे एज अ हॉबी मैंने ऐसा स्नैपचैट फिल्टर बनाने की कोशिश किया था. Okay. थोड़ा बहुत काम किया था, एक कुत्ते का नाक डाल दिया था मैंने यहाँ पे. सो दिस इज इट्स फॉलोइंग द सेम प्रिंसिपल्स एक्चुअली व्हेन यू पुट कॉलेज में कुत्ते का नाक डालते थे, आज लोगों पे चश्मा डालते हैं. ये सो अभी तो वो जब मैं ज्वाइन किया था इट वाज ऑलरेडी एट अ वेरी एडवांस स्टेज, ऑलरेडी डिप्लॉयड था. अभी उसका एक V2 चल रहा है, बट एंड काफ़ी एक्साइटेड था. Now that you mentioned that that's the product you liked working at, अभी if you can disclose what's the project that you are working on and अभी राइट नाउ आई डोंट लाइक, कुछ दिनों में पता चल जाएगा. Whether Lenskart कुछ बड़ा निकाल रहेगा. हाँ काइंड ऑफ, बहुत इतना एक्सपेक्टेशन है बट इट वुड बी अ नाइस फीचर Okay, got फॉर it. हेल्पिंग यू फाइंड द ग्लासेस यू लाइक. एंड तो हाँ उस पर तो अभी बहुत ज़ोर से काम चल रहा है. आई एम ऑलमोस्ट डन विथ माई पार्ट एंड अभी फ्रंट एंड इंटीग्रेशन बाकी है उसका. Nice. So talking about that was quite good bit on Lenskart. Still, like what most of the people are interested in जब वो कोई भी career path चुनते हैं, sounds like you went a lot because of your passion, but at some point of time finances बहुत matter करते हैं. Right? At almost all At points. almost all point of time. So like how does like what can a person who is junior or mid level जो अभी इंडस्ट्री में एकदम data fresher science में, के हाँ. घुस रहा है, तो वो कैसी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकता है अराउंड लाइक? So in my opinion तुम अभी घुसे हो, you have some decent projects on your resume. I think तुम एटलीस्ट 6 से 10 के बीच में तो एक्सपेक्ट करना ही चाहिए. अच्छा. If you are slightly better than that, maybe 12, 13, something like that. तुम just घुसे, and obviously depending on the company as well. These numbers sound very much like software development. इसमें भी वो जुमलेबाजी होती है कि पूरा 12 का बेस है लेकिन बता दिया है 50 का पैकेज. नहीं वो again depends on the again company, depends I on the guess. company. 7 करोड़ इसमें से ये लो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन. पुराने कंपनी में वैसा था. ट्राइब्स में बहुत स्टॉक ऑप्शंस दिए, Shit. फिर बंद हो गई. तो सब कुछ वेस्ट कर दिया, अभी तक बेचा नहीं है. एनीवे बट तो आई थिंक तुम्हें उतना तो एक्सपेक्ट करना चाहिए. अगेन डिपेंड्स ऑन द कंपनी, डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स यू हैव डन. So my question was,
I wanted to know कि ऐसे software development 1, software development 2, SD1, SD2 ऐसे roles होते हैं जैसे ML1, ML2 और या DS data scientist 1, data scientist ऐसे होते हैं क्या? तो बेसिकली ये अगेन तुम्हारे कंपनी में डिपेंडेंट है. सम ऑफ देम विल नेम यू एज अ जूनियर डेटा साइंटिस्ट, some can name you data scientist 1, data scientist 2. तो इन माई केस अभी तो लेंसकार्ट में वैसा कुछ है नहीं. यू जस्ट गेट नेम्ड एज अ डेटा साइंटिस्ट, थोड़ा और प्रोग्रेस किया, यू बिकम अ सीनियर डेटा साइंटिस्ट और हेड डेटा साइंटिस्ट एंड सो ऑन. And how does the compensation evolve as you climb the corporate ladder in data science? So अभी तो एज अ जूनियर मैंने ऑलरेडी मेंशन किया कि उतना तो एक्सपेक्ट करना चाहिए. नाउ वंस यू हैव रीच्ड एटलीस्ट लाइक 2 years of experience सो ऑन, मे बी यू कैन एक्सपेक्ट समथिंग. तो एट दिस पॉइंट ऑफ यू आर लाइक more than a junior but lesser than a senior, right? So you will be still called a junior. No, तुम बस डेटा साइंटिस्ट हो जाओगे अभी. फॉर एग्जाम्पल आई एम अ डेटा साइंटिस्ट राइट नाउ. अच्छा. राइट, ट्राइब्स में आई वाज अ जूनियर डेटा साइंटिस्ट. तो यू कैन मे बी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम तुम एक्सपेक्ट करो कि 15 से 20 के आसपास कुछ तो आना चाहिए. इतना तो आना ही चाहिए. इन हैंड आफ्टर टैक्सेशन इतना तो आना चाहिए तुम्हारे पास, राइट? अगेन कंपनी. Yeah, company to company. But on an average, 6 to 10 is what they need to expect as a junior. Yeah, it can be obviously be more, but Yeah, it very much sounds so. How do you see this compensation, let's say, evolving over time for people who want to pursue want to data get in science? this field, right? कि मतलब आज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई आज इतना पे मिल रहा है, कल को इससे कुछ ज़्यादा बढ़ के मिलेगा, कम होगा. आई थिंक बढ़ेगा बिकॉज राइट नाउ ना मतलब डेटा साइंस के बारे में इतना हाइप हो रहा है, इतना सब कुछ चल रहा है, स्पेशली राइट नाउ अबाउट ये जेनरेटिव AI. राइट, इतने जॉब अपॉर्चुनिटीज बन रहे हैं दैट आई थिंक इट विल ओनली गो अप राइट नाउ. एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वो सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच ही जाएगा कुछ साल बाद. अच्छा, जैसे SD का बबल टूटा था, PM का बबल फूटा था, एंड देन द सैलरी एकदम से स्पाइक करती है और एकदम से सारे लोग नॉर्मलाइज हो जाते हैं. हाँ, अभी भी काफ़ी हाई पे ही है सैलरीज जो भी है, बट या अभी आई थिंक इट विल गो हायर. बैंगलोर में काम निकल सकता है कि नहीं ऐसे सैलरी? यार कहाँ रहोगे तुम बताओ. कहाँ रहना है बैंगलोर में बताओ. उसके ऊपर डिपेंड करता है. मतलब कोरमंगला जैसी जगह. नहीं कोरमंगला नहीं निकलेगा भाई. नहीं, कोरमंगला निकल सकता है, सेविंग्स थोड़ी कम हो जाएंगी और क्या. Okay. Now that I have spoken about generative AI, what's your opinions on ChatGPT and its future impact? Do you think that वो ज़्यादा evolve होके will it be like a replacement for all the jobs as people are expecting it to be? Well, as of now, though, I only see it replacing mostly like content writing, mainly like तुम उसको कुछ टॉपिक दे दो एंड एक बहुत सुंदर सा ऐसे निकाल के दे देगा वो. Right. Now in the and also you can also give it some kind of code. तुम बोल सकते हो this code is in Python. Convert it to Java. It will do that as well. There are new roles coming up saying there are prompt engineering. Prompt engineering, yes. So that's basically a study of saying कि how are you going to instruct ChatGPT or these generative AI to give you the best results possible. At least मुझे तो इतना ही ही पता है. ये भी पता है. डेटा एनोटेशन का कुछ सिमिलर तरीका है क्या? नहीं, Different. Okay. But even I'm not very sure about this topic. Like I try to keep up with trends in the industry, but ये थोड़ा नया है. I have still dive in because I'm familiar with अपना traditional data science. I'm familiar with image processing, computer vision. NLP is something I haven't really ventured into yet a lot. तो अभी एक बहुत हॉट टॉपिक हमेशा चलता रहता है, फैंग और स्टार्टअप. Right, I see that you've worked in startup and you've also worked in an MNC setup. What do you think is more better around for people who are starting in data science? उनके लिए क्या best रहेगा? I think starting in any profession, it might be controversial. Starting in any profession, I think if you go at a startup first, you get a lot of exposure to all kinds of things because वो तुम्हें कुछ भी पे काम करवाएंगे. In my case, tribes में या in the company जहाँ पे ऐसे we were hosting competitions a lot, मैंने बहुत कुछ सीखा apart from data science and it has genuinely helped me with stuff here at Lenskart. Right, क्योंकि tribes में जाने के बाद ही I learned properly about Google Cloud Platform जो if I wasn't given an opportunity to interact with it properly, मैं Lenskart में use किया हूँ बहुत इसको. तो Lenskart भी GCP use करता है.
अरे मतलब वो AWS यूज़ करते हैं, GCP यूज़ करते हैं, भाई बहुत कुछ है. अच्छा अच्छा. बट बेसिकली आई डेंट हैव दैट डिले कि टाइम लगेगा पहले GCP के साथ फेमिलियर हो एंड देन यूज इट, राइट. तो या आई थिंक स्टार्टअप्स में अगर तुम काम करोगे इनिशियली इट गिव्स यू लॉट ऑफ एक्सपोजर. एटलीस्ट 1-2 साल तुम काम किया है, यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स. You get to learn to execute things, Exactly. more number of things, or Yeah. you focus on quantity more, and then probably you find quality in MNCs. Yeah. What happens in traditional developmental roles is कि अगर आप एक लेवल तक पहुंच जाते हो उसके बाद आप अपना चीज़ नहीं करते. एज इन टेकिंग माई एग्जाम्पल, आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर ना, तो SD3 के बाद आई डोंट थिंक आई विल बी वर्किंग, आई विल बी कोडिंग, आई विल बी जस्ट मैनेजिंग पीपल. I see. Do you think similar happens? I don't want to do that, but I see this as the end thing that's going to happen. But do you think data science में भी ऐसे होता है? Yes, eventually तुम जितने ऊपर जाओगे, at one point of time you will be leading the projects and you will be delegating tasks to your juniors कि तुम ये वाला पार्ट करो. यूजुअली डेटा साइंस इंटर्न को बोला कि भाई कहीं से डेटा लेके आ तू. Similar kind of setup होता है, ऊपर जाके मैनेज करते हो, नीचे वाले से काम चलवाते हो. इन माई ओपिनियन अगर ऊपर जाके भी तुम अगर इफ यू स्टिल गेटिंग मतलब स्टिल गेटिंग योरसेल्फ इन्वॉल्व नाउ विद ऑल दिस, एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई वांट टू डू. तो दैट्स अ रियली गुड थिंग. एंड राइट नाउ लेंसकार्ट में जो भी है जो मैनेज कर रहा है ये सब कुछ, ही ऑल्सो लाइक इन्वॉल्व्स हिमसेल्फ अ लॉट विद ऑल द प्रोजेक्ट्स जितना पॉसिबल हो सके without overloading. That's really good क्योंकि managers usually are like अच्छा बेटा नया आया है इसलिए जोश दिखा रहा है. तेरे को सैटरडे काम करना है, तुझे संडे काम करना है. रुक अभी देखो डेटा एनोटेट करने बैठाता हूँ. अरे डेटा एनोटेशन बहुत हेडेक है. So like where do you a lot of questions around corporate ladder, salary ये और वो, बट एक कुछ हर एक रोल का एक एंड गेम या एंड गोल होता है, राइट, जहाँ पे यू सी योर सेल्फ गोइंग. व्हाट डू यू थिंक इज द एंड टारगेट यू वांट टू अचीव बाय बीइंग अ डेटा साइंटिस्ट? In my opinion, right now, just keep gaining more experience, work on all sorts of projects possible as of now. ताकि बाद में जब मैं head data scientist बन जाऊँ, I can mentor my juniors properly. So that's like sort of क्या बोलूँ, it will give me a lot of satisfaction that I'm pointing people in the right direction. Right. जैसे Paying it forward. Exactly. जिन्होंने मुझे हेल्प किया, I want to help others. जैसे लोगों ने हेल्प किया मुझे, I want to help others as well. तो इन द फ्यूचर मैंने उतना सोचा नहीं अभी तक, बट या दिस इज डेफिनेटली पार्ट ऑफ इट. एंड मे बी आई बिकम सॉर्ट ऑफ लाइक अ डेटा साइंस प्रोडक्ट मैनेजर, सम डेजिग्नेशन लाइक दैट एग्जिस्ट. सो या 3 लोगों को बोलो कि आगे 3 लोगों की हेल्प करें. अच्छा जय हो. जय हो. और बाय द वे मैंने सुना था कि there was an engineer at Google who quit his job saying that the AI has become sentient. और वो इन्वॉल्व नहीं रहना चाहता था कि क्योंकि this might bring destruction to humanity. What are your views on it? Was it too extreme of a reaction or? As of मतलब in my opinion at least, as of right now it was a bit of an extreme reaction. बट ChatGPT के साथ जब तुम बात करते हो ना, यू एक्चुअली फील लाइक कि यार ये तो कुछ ज़्यादा ही डिटेल में बोल रहा है. बट राइट नाउ, एज ऑफ राइट नाउ, आई डोंट थिंक इट्स अ बिग इशू. बट मे बी इन द फ्यूचर, एंड आई थिंक कंपनीज एक्चुअली वर्किंग ऑन इट, राइट, टू मेक AI sentient. तो इट विल, इट कैन हैपन. बिग इशू इन टर्म्स ऑफ लोग यूजुअली बात करते हैं कि AI तुम्हारी जॉब्स ले लेगा. हाँ, तो do you think? Yeah, it could be possible depending on the complexity of your job. It is entirely possible. मतलब you mean जो like कम complex काम रहेंगे थोड़ा वो कम AI overtake? Maybe it could be possible. Okay. Although there will always be people who will prefer human touch on it, just to make sure. But what if you cannot differentiate? That's a new one. ये सब एक strategy है. Okay. So are there any like fun project that you did on weekends that you'd like to share? Recently not so much, but एक time पे I worked on sanitizers आते हैं ना, sanitizer detection. What is this? Why do you want to detect sanitizer? अच्छा कि मतलब आसपास कई sanitizer मिल जाए. अरे ऐसा मेरा एम था कि यार कोई कहीं पे घुसो फोन लेके, हाँ सैनिटाइजर. कोविड ने कुछ ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर दिया था. Bro, I used sanitizers before they were cool. Oh. Nice. Yeah.
तो तुम उन लोगों में से थे क्या जो पीपी किट पहन के घूमते थे कोविड में? कैसे पता चला? ये तो फैक्ट निकला बे. अरे वो इंडिगो ऐसे फ्री में बांट रही थी. We're also getting good at prediction stuff now. Talking to a data scientist. Okay, so एक और another fun question if you don't mind. तो अगर ऐसे डेटा रियल वर्ल्ड में बहुत ठीक है कि यूजर का डेटा ये और वो, अगर लेकिन कोई एक फिक्शनल यूनिवर्स का तुमको कोई डेटा मिल जाता कि यार ये इसका मुझे कोई डेटा मिल जाए, इसका मुझे कोई प्रेडिक्ट करना है, तो क्या रहेगा डेटा, किसका रहेगा और तुम क्या प्रेडिक्ट करना चाहोगे उससे? इफ यू वांटेड टू प्ले अराउंड विद दैट डेटा. वेल मुझे स्टार ट्रेक में जो स्पेसशिप्स है ना वो काफ़ी फैसिनेट करते थे. तो हमेशा आई वांटेड टू नो कि उनका जो भी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो लोग अबाउट, बिकॉज दे यूज्ड टू प्लॉट कोर्सेज एंड स्टफ एंड दे आल्सो यूज्ड टू इन यूनिवर्स या दे यूज्ड टू. तो उस सब के बारे में थोड़ा डेटा कलेक्ट करके आई जस्ट वांट टू प्ले अराउंड विद एंड गेट टू नो कि वो डेटा दिखता कैसा है. ओके, Very nice. Have you ever thought of analyzing your Tinder matches के data? और इसके लिए मैचेस होने चाहिए. तो ये भी एक fictional universe है फिर. oh god. ठीक है, ये इसके ऊपर नहीं थोड़ा डिस्कस करते हैं. आई सी यू. Coming to this next part of the segment, if there's a fresh engineer or fresh student who wants to break into data science, what would you suggest them to do? As in, what steps do they need to, what skill sets they need to learn, what technologies they need to learn, and how do they formulate their resume, and how do they start applying to companies? Right. So this was a mistake that I did initially, which was not focusing on maths and stats at the beginning, right? I would suggest them कि भाई get down, like maths revise करो जो भी तुमने पढ़ा है, go back to statistics, सब कुछ पढ़ो अच्छे से. जब तुम्हें मशीन लर्निंग में सिखा रहे हैं what linear regression is, what logistic regression is, don't simply focus on coding it down immediately. Understand what's, क्योंकि you have functions ना कि model dot predict, model dot fit. Do not just do that. Obviously you have to understand what's going on inside the model. ठीक है, because model में hyper parameters होते हैं which you have to tune. So you have to understand the model in order to tune the hyper parameters. ठीक है, so my main suggestion would be focus on the math inside the models. This is very essential, very important. I feel like जोश में कभी लोग they just skip directly कि जल्दी इसको implement कर देते हैं. ठीक है, and people are using Python, so regarding Python यार बहुत अच्छे courses है, you can just follow those. उसके ऊपर ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, but there are also other languages like R, MATLAB. What is that? MATLAB, R and MATLAB, yeah. So I haven't really used those a lot for. So Python is a must. Python. So now the thing is कि mainly companies में जब तुम जाओगे they'll be asking for Python only. R and MATLAB, in my opinion at least, मैंने जितने देखे हैं, they're mainly used for research purposes. Right. जबकि Python तुम्हें कुछ deploy करना है, अब तुम R में बैठ के बनाओगे या MATLAB में बनाओगे, उसका deployment I think it becomes a bit more difficult. Understood. Alright. So wrapping around that, I think we've covered a lot of really insightful topics from you, knowing around data science, कैसे crack करना है, कैसे जाना है, क्या होता है, कहाँ foreseeable future दिखता है. So thanks for that, Siddhartha. We have our fun segment over here, जिसमें हम थोड़ा rapid fire questions करते हैं. थोड़े तीन चार नहीं करीब 10-15 simple questions रहेंगे. 3-4 रखते हैं तो rapid fire है ना, जल्दी खत्म हो जाता. Yeah. ठीक है. So you just have to answer in one word. That's the rule, right? So we'll go one by one. So first question is MCU or DCU? DCU. Okay, that's a good choice, by the way. If you could have a dinner with a historical figure, who would it be? Adolf Hitler. क्या उससे भी बैठ के तुम डेटा एनालाइज करना चाहते हो क्या? जानना है यार दिमाग में क्या था उसके. अच्छा मैं गलत डायरेक्शन में ले जा रहा था इसको. I see what how you become data scientist. Okay, what's your favorite programming language for data science? Python. Okay, cats or dogs? Dogs. Okay, favorite book or movie about data science or about AI? It's not really related to what I'm doing, but Terminator 2.
इंटरेस्टिंग आंसर्स. इसीलिए एडोल्फ हिटलर के साथ खाना चाहता है ये. Yeah, I assumed कि कुछ आयरन मैन बोलेगा लेकिन he chose Terminator. Okay, coffee or tea? Coffee. Okay, favorite data science related meme or joke? There's one, like, it's not really favorite, but there's one concept in data science called overfitting. Okay. And there's this guy who has a mattress which is exactly the shape of how he's sleeping. नाइस. क्या परफेक्ट मीम है भाई ये. God. Overfitting. Yeah, right. Okay. एडिटर ये मीम मिले तो यहाँ पे डाल देना. यहाँ पे इधर बीच में. Okay. What's the nerdiest thing you have ever done for fun? Nerdiest thing, nothing specific, but you know. बताया तो ये कैमरा से लेके. अरे यार वो तो फन के लिए. हाँ वो भी फनी था, डिटेक्टिंग सैनिटाइजर्स. But yeah, there was some other projects I found जहाँ पे there was a data set where squirrels, there was data about how frequently they might approach you at Central Park in New York. Oh, that's so cute. नाइस. Yeah. तो उसका कुछ रिजल्ट निकला? वो नहीं, मैं अभी तक एनालाइज नहीं किया उसको. अच्छा. So you just read the topic for fun, that's all. नहीं मतलब है मेरे पास, I have to do something with it. Okay, let me know if you do something about it. Okay, drive or ride hail? I don't know how to drive. So no options left. No options left. Apple or Android? Android. My guy. If you weren't a data scientist, what profession would you pick? Archaeology. You like digging up the past. Yeah. बहुत ज़्यादा past में interest है तुम्हारी. Okay, if you could time travel, would you go to the past or would you go to the future? Future. Dude, you are just going against somehow you've been answering past questions. ठीक है. What is the one thing that you would like to change, let's say in data science, how things work? Nothing that really springs to mind right now. So. Okay, fine. So nothing to change. Okay. That ends up our episode with Siddhartha, giving us really good insights over data science. And I hope you found some value out of this particular podcast. Leave your comments below down. Ask us any questions you want to, and we'll ask Siddhartha, even invite him again to our podcast again if you want to have him more around over here. Don't forget to subscribe. And don't forget to subscribe. Thanks. This is making sense. Thanks, you all.